Harihi Om. Shri Gurubhyo Namaha. These shlokas are recorded by separating the stanza word by word for easy learning. Please share your feedback in the comment. Kindly subscribe and share to others. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Narayanaya. Shloka 8. Kamsa has asked for the drums to be stopped. Then the wicked Kamsa, not knowing what to do, ordered for your respected parents to be killed. O omnipresent Lord, he also commanded that you be sent far away to a remote place. You were very annoyed at his wicked words. You leaped with a determination to the throne of Kamsa, to the highest balcony of his palace, like a Garuda flying to the top of the mountain. Even though he tried to defend himself with a sword and was hard to catch, you grabbed him, the son of Ugrasena. ஸ்லோகம் 8. கம்சன் முரசுகளை நிறுத்தச் சொன்னான். பிறகு என்ன செய்வது என்று தெரியாத துஷ்டனான கம்சன் உன் மரியாதைக்குரிய பெற்றோரை கொல்லும்படி கட்டளையிட்டான். ஓ எங்கும் நிறைந்த பிரபுவே, உன்னை வெகு தொலைவில் உள்ள ஒரு தொலைதூர இடத்திற்கு அனுப்பும்படியும் அவன் கட்டளையிட்டான். அவனுடைய தீய வார்த்தைகளால் நீ மிகவும் கோபமடைந்தாய். மலையின் உச்சிக்கு பறக்கும் கருடன் போல கம்சனின் அரண்மனையின் மிக உயர்ந்த பால்கனியில் உள்ள சிம்மாசனத்தில் உறுதியுடன் குதித்தாய். அவன் வாளுடன் தன்னை காப்பாற்றிக் கொள்ள முயன்றாலும், பிடிக்க கனமாக இருந்தாலும் நீ அவனை, உக்ரசேனனின் மகனை പിടിത്താய். കംസൻ വാദ്യഘോഷാദികൾ നിർത്തുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ ദുഷ്ടനായ കംസൻ എന്തു ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ നിങ്ങളുടെ ബഹുമാന്യരായ മാതാപിതാക്കളെ കൊല്ലുവാനും ഉത്തരവിട്ടു. ഓ സർവവ്യാപിയായ ഭഗവാനെ, നിങ്ങളെ വളരെ ദൂരെയുള്ള ഒരു വിദൂര സ്ഥലത്തേക്ക് അയക്കുവാനും അവൻ കൽപ്പിച്ചു. അവൻ്റെ ദുഷ്ടവാക്കുകൾ കേട്ട് നിങ്ങൾ വളരെ അസ്വസ്ഥരായി. പർവ്വതത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് പറക്കുന്ന ഗരുഡനെ പോലെ നിങ്ങൾ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ കംസന്റെ സിംഹാസനത്തിലേക്ക് കുതിച്ചു ചെന്നു. വാളുമായി സ്വയം പ്രതിരോധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടും പിടിക്കാൻ പ്രയാസമായിരുന്നിട്ടും നിങ്ങൾ അവനെ പിടികൂടി. ഉഗ്രസേനന്റെ മകൻ. ശ്രീമൻ നാരായണീയം ദശകം 75 ശ്ലോക 8. കംസ സംവാര്യ തൂര്യം ഫലമതിഹി അവിദൻ. കംസ സംവാര്യ തൂര്യം ഫലമതിഹി അവിദൻ. कंस संवार्य तूर्यं खलमतिरविदन्. कंस संवार्य तूर्यं खलमतिरविदन्. कंस संवार्य तूर्यं खलमतिरविदन्. कार्यम् आर्यान् पितॄन् तान् कार्यमार्यान् पितॄंस्तान्. कार्यमार्यान् पितॄंस्तान्. कार्यमार्यान् पितॄंस्तान्. कंस संवार्य तूर्यं खलमतिरविदन्. कार्यमार्यान् पितॄंस्तान्. कंस संवार्य तूर्यं खलमतिरविदन्. कार्यमार्यान् पितॄंस्तान्. कंस संवार्य तूर्यं खलमतिरविदन्. कार्यमार्यान् पितॄंस्तान्. आहन्तुं व्याप्तमूर्तेः. आहन्तुं व्याप्तमूर्तेः. आहन्तुं व्याप्तमूर्तेः. तव च समशिषत् दूरम् उत्सारणाय. तव च समशिषत् दूरमुत्सारणाय. तव च समशिषत् दूरमुत्सारणाय. तव च समशिषत् दूरमुत्सारणाय. आहन्तुं व्याप्तमूर्तेस्तव च समशिषत् दूरमुत्सारणाय. आहन्तुं व्याप्तमूर्तेस्तव च समशिषत् दूरमुत्सारणाय. आहन्तुं व्याप्तमूर्तेस्तव च समशिषत् दूरमुत्सारणाय. कंसः संवार्य तूर्यं खलमतिरविदन्. कार्यमार्यान् पितॄंस्तान्.
आहन्तुं व्याप्तमूर्तेस्तव च समशिषद्दूरमुत्सारणाय कंसः संवार्य तूर्यं फलमतिरविदन् कार्यमार्यान् पितृंस्तान् आहन्तुं व्याप्तमूर्तेस्तव च समशिषद्दूरमुत्सारणाय कंसः संवार्य तूर्यं फलमतिरविदन् कार्यमार्यान् पितृंस्तान् आहन्तुं व्याप्तमूर्तेस्तव च समशिषद्दूरमुत्सारणाय रुष्टः दुष्ट उक्तिभिः त्वं रुष्टः दुष्ट उक्तिभिः त्वं रुष्टो दुष्टोक्तिभिस्त्वं रुष्टो दुष्टोक्तिभिस्त्वं रुष्टो दुष्टोक्तिभिस्त्वं गरुड इव गिरिं मञ्चमञ्चन् उदञ्चत् गरुड इव गिरिं मञ्चमञ्चन् उदञ्चत् गरुड इव गिरिं मञ्चमञ्चन्नुदञ्चत् गरुड इव गिरिं मञ्चमञ्चन्नुदञ्चत् गरुड इव गिरिं मञ्चमञ्चन्नुदञ्चत् पृष्टो दुष्टोक्तिभिस्त्वं गरुड इव गिरिं मञ्चमञ्चन्नुदञ्चत् पृष्टो दुष्टोक्तिभिस्त्वं गरुड इव गिरिं मञ्चमञ्चन्नुदञ्चत् रुष्टो दुष्टोक्तिभिस्त्वं गरुड इव गिरिं मञ्चमञ्चन्नुदञ्चत् खड्ग व्यावल्ग दुस्सङ्ग्रहम् अपि खड्ग व्याहल्ग दुस्सङ्ग्रहम् अपि खड्ग व्यावल्ग दुस्सङ्ग्रहमपि खड्ग व्यावल्ग दुस्सङ्ग्रहमपि खड्ग व्यावल्ग दुस्सङ्ग्रहमपि च हठात् प्राग्रहीः औग्रसेनिं च हठात् प्राग्रहीरौग्रसेनिं च हठात् प्राग्रहीरौग्रसेनिं च हठात् प्राग्रहीरौग्रसेनिं खड्ग व्यावल्ग दुस्सङ्ग्रहमपि 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 च हठात् प्राग्रहीरौग्रसेनिं रुष्टो दुष्टोक्तिभिस्त्वं गरुड इव गिरिं मञ्चमञ्चन्नुदञ्चत् खड्ग व्यावल्ग दुस्सङ्ग्रहमपि च हठात् प्राग्रहीरौग्रसेनिं रुष्टो दुष्टोक्तिभिस्त्वं गरुड इव गिरिं मञ्चमञ्चन्नुदञ्चत् खड्ग व्यावल्ग दुस्सङ्ग्रहमपि च हठात् प्राग्रहीरौग्रसेनिं रुष्टो दुष्टोक्तिभिस्त्वं गरुड इव गिरिं मञ्चमञ्चन्नुदञ्चत् खड्ग व्यावल्ग दुस्सङ्ग्रहमपि च हठात् प्राग्रहीरौग्रसेनिं कंसः संवार्य तूर्यं खलमतिरविदन् कार्यमार्यान् पितृंस्तान् आहन्तुं व्याप्तमूर्तेस्तव च समशिषद्दूरमुत्सारणाय रुष्टो दुष्टोक्तिभिस्त्वं गरुड इव गिरिं मञ्चमञ्चन्नुदञ्चत् खड्ग व्यावल्ग दुस्सङ्ग्रहमपि च हठात् प्राग्रहीरौग्रसेनिं कंसः संवार्य तूर्यं खलमतिरविदन् कार्यकार्यान् पितृंस्तान् आहन्तुं व्याप्तमूर्तेस्तव च समशिषद्दूरमुत्सारणाय रुष्टो दुष्टोक्तिभिस्त्वं गरुड इव गिरिं मञ्चमञ्चन्नुदञ्चत् खड्ग व्यावल्ग दुस्सङ्ग्रहम् अपि च हठात् प्राग्रहीरौग्रसेनिं कंसः संवार्य तूर्यं खलमतिरविदन् कार्यमार्यान् पितृंस्तान् आहन्तुं व्याप्तमूर्तेस्तव च समशिषद्दूरमुत्सारणाय रुष्टो दुष्टोक्तिभिस्त्वं गरुड इव गिरिं मञ्चमञ्चन्नुदञ्चत् खड्ग व्यावल्ग दुस्सङ्ग्रहमपि च हठात् प्राग्रहीरौग्रसेनिं
कंसः संवार्य तूर्यं खलमतिरविदन् कार्यकार्यान् पितृंस्तान् आहन्तुं व्याप्तमूर्तेस्तव च समसिषत् दूरमुत्सारणाय पृष्टो दुष्टोक्तिभिस्त्वं गरुड इव गिरिं मञ्चन्नुदञ्चत् खड्गव्यावल्गदुःसङ्ग्रहमपि च हठात् प्राग्रहीरौग्रसेनिम् कंसः संवार्य तूर्यं खलमतिरविदन् कार्यकार्यान् पितृंस्तान् आहन्तुं व्याप्तमूर्तेस्तव च समसिषत् दूरमुत्सारणाय पृष्टो दुष्टोक्तिभिस्त्वं गरुड इव गिरिं मञ्चन्नुदञ्चत् खड्गव्यावल्गदुःसङ्ग्रहमपि च हठात् प्राग्रहीरौग्रसेनिम् कंसः संवार्य तूर्यं खलमतिरविदन् कार्यकार्यान् पितृंस्तान् आहन्तुं व्याप्तमूर्तेस्तव च समसिषत् दूरमुत्सारणाय पृष्टो दुष्टोक्तिभिस्त्वं गरुड इव गिरिं मञ्चन्नुदञ्चत् खड्गव्यावल्गदुःसङ्ग्रहमपि च हठात् प्राग्रहीरौग्रसेनिम्